6 state. Ask it. Go ahead. I have a question to supplement the previous question. I'm not looking from NDTV. The main principal opposition party, Congress, has not attended the meeting. They have held press conferences. They have been categorically saying that there were memorandums and further communications sent, and they have been waiting 2 months for the EC to reply on those. So, EC's clarification on that. You have been link. Please say okay. I'm Sukrita from the News18. I'm really sorry for this question, but I just want to request you for the point about why the 2001 census. It's a little if you could just break it down in a little bit of the paper of the language, it would be really helpful. Okay. Sir, as a developer from Because I want to ask you, sir, in a remote country, this census is taken in 2011. So why not 2001? Why? So let me take this much, and I suppose these are basically you've covered all the questions. Yeah. The question is how the parties, some of the political parties and opposition also. So this is the issue about NRC, the that the devolution should be carried out after the NRC procedure. So what is your take on Okay. So first question is about the uneven population growth in the state. See, as I mentioned, there are variety of factors which would go into the decision making, which is geographical area, spread, and 2001 census, population, and others. Essentially, these are the parameters on which it would be based. But as I also mentioned, some groups asked for taking this aspect into consideration and also asked for the margin and the variation within the constituencies to be increased so as to take this factor into consideration. We have received those suggestions, but we'll take a call after studying it and after seeing the other precedents. As regards timing, generally timing is not that we comment on, and we don't. The timing is one thing which we do not disclose either. But having said that, people ask us, when are you announcing elections? What is the schedule? What is the timeline? So this people come to know only through the press. So we announce it straight away in the press. Nobody can ever know what is the timeline. But we are very encouraged by, look at the very fact that close to 60-65 organizations, 10 political parties coming and spending time with us, and as much as time they wanted, we continue till late, and we are giving them still time. So the way the constructive suggestions have come, it suggests that there is a understanding, there is an appreciation, there is a participation to get this exercise completed. If we continue to receive such kind of support and such kind of suggestions, we will do our work of doing it in a speedy manner as much as required, but with extreme care. And it's a complex exercise. It has to take into account the different geographical, historical, cultural, demographic aspects. हम ऐसा भी नहीं करेंगे कि that जल्दी में कोई गलती करे. So we'll reconcile all this and come within the time frame which we think would be feasible.
why 2001 again you asked. See, I would request you to read the article which I mentioned, the 170. So there are two aspects to this entire exercise. One, एक तो जो constituencies already existing हैं, उनको हर census के बाद this provision provides for their readjustments. This is one part. For some reason, if that readjustment has not taken place, and last delimitation took place on the basis of 1971 census. So, जो आज existing boundaries हैं, तो उन boundaries को आप change करेंगे 2026 के बाद first census के basis. And till then, wherever it is remaining, the article says may be readjusted on the basis of 2001 census. So that is the relevance of this particular clause. Now somebody, friend asked about why in J&K then it was 2011. A very pertinent question. And you may also ask, somebody asked us I forgot to mention, कि वहाँ तो delimitation commission बनाया था, यहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं बना सकते. So the status of the, number one, you should appreciate that the status of the state underwent a change. That is the first point. And the second point, the J&K Reorganization Act itself provided for a delimitation commission in 2011 to be the census base. So it is as per the Act of Parliament. So I hope I am clear to the person who has asked this question. So that is the difference. Now about NRC. See, the two issues are different issues. And there is no legal bar in carrying out two processes separately and simultaneously. And there is no legal sequencing which law provides for. I hope I am clear to all of you. So, these are two legally distinct activities, not having a legal bar or a legal sequencing, and triggers under different legislative framework. So we are well within the process of defining this based on a census figure, which is the 2001, and the trigger for us is the assignment of the deferment by the Honorable President, and thereafter under Section 8A starting this exercise. So this, I suppose, answers everybody's questions. Is there? So the Congress Party. Do we have their letter which they wrote to us and our replies? Do we have? Yeah. Do we have? Yes. You mentioned it. You do not repeat. We are quite. I mentioned it in Karnataka also. इस तरीके के टर्म तो हम सुनने के आदी हैं. ये कितनी ही मेहनत करें, ये शब्द तो हमें सुनने पड़ते हैं. तो लेकिन इसका जवाब दूंगा मैं आपको. तो आप डिसाइड करेंगे कि फिक्सिंग है कि नहीं है. जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि कोई जो एक ड्राफ्ट की बात हो रही है, सर्कुलेट हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमें कोई डिक्टेट करेगा. दिस इज नेवर 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 पॉसिबल. The record of the election commission is not such that we take dictation from anybody, which we never take and we will never take. So let's clarify this part. देखिए, एज ए कमीशन हम सभी अपने जितने भी प्रोसेस हैं उसमें हमारे दो मेन स्तंभ हैं जिस पर पूरा इलेक्शन कमीशन वर्क करता है. दो आधार हैं, दो फाउंडेशनल आधार हैं. वन इज डिस्क्लोजर, सेकंड इज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स. आप जब चुनाव का प्रोसेस होता है, आप सब लोग तो, मैं तो उस समय भी आया था जब 2021 में आपका चुनाव हुआ था. कोविड उस समय पीक में था. हम लोग जो भी इलेक्शन का प्रोसेस होता है, वो चाहे मशीन का कहीं जाना हो, पॉलिटिकल पार्टी का जाना हो, फोर्स का एम्प्लॉयमेंट हो, रैंडमाइजेशन हो, कोई भी प्रोसेस हो, इलेक्टरल रोल्स बनना हो, हम सबको नेट पे डिस्क्लोज करते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को और स्टेक होल्डर्स को उसमें साथ लेके चलते हैं.
यही दो हमारी स्ट्रेंथ है और यही दो चीज हमें हमारे प्रोसेस में ट्रस्ट क्रिएट कराती हैं। आप हर समय पे आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, इवन पोलिंग पे मौजूद रहते हैं, इवन काउंटिंग के समय मौजूद रहते हैं। आप देखते हैं आपकी आंखों के सामने सब हो रहा है। हम पॉलिटिकल पार्टी से सिग्नेचर लेते हैं जब मशीन जाती है, रैंडमाइजेशन होता है, पोल क्लोज होता है, शाम में कितने लोग वोट दिए उसका एक फॉर्म उनके हाथ में पकड़ाते हैं, मशीन का नंबर देते हैं, काउंटिंग के समय देते हैं। तो वही प्रोसेस इसमें भी है। तो हमारे लिए सबकी सहभागिता और सबकी साझेदारी इस प्रोसेस में हमारे लिए तो बहुत अहम है। इसलिए हम इस बात को बहुत वैल्यू करते हैं और बार बार रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सभी स्टेक होल्डर, सभी पार्टी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपने सुझाव दें। मैं इतना ही कह के रोकना चाहता हूं, अगर आप ज्यादा जिद ना करें, क्योंकि हमारी इच्छा यही है कि सब लोग हमारे साथ आएं और पार्टिसिपेट करें। और फिक्सेशन अगर हो सकता ही नहीं है, बिकॉज फॉर्मूलाज एंड बेसिस हम आपको खुद बताएंगे और उसके बाद ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे। कोई फाइनल ऑर्डर तो कर नहीं देंगे। ड्राफ्ट पब्लिश करने के बाद आप हमसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, ये क्यों किया, इसमें क्या फॉर्मूला लगाया। अगेन एज आई मेंशन, इट इज द डिस्क्लोजर, it is the participation, and it's not only participation of 1, 2, 3, 4, 5 parties, but all organizations and all citizens, सभी नागरिकों का पार्टिसिपेशन सबके समक्ष रखेंगे। पहले आप खुद देखेंगे कि वो जो पुराने ड्राफ्ट्स की बातें होती है उनसे कितना डिफरेंट है, कितना उनके साथ है, तो आपको तो खुद पता लग जाएगा। यू विल बी जज योर सेल्फ, यू विल जज योर सेल्फ। सो आई वुड थिंक आई विल स्टॉप इट हियर। जहां तक वैसे फिर भी जनवरी में, जब दिसंबर में हमने ऑर्डर निकाला था, तो जनवरी में हमने सबसे पहले टाइम मिलने के लिए सम्मानित सदस्यगण को दिया था, जो हैं वो हमसे मिले थे। तो उनका रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में है। मोस्टली उसमें भी मुद्दे यही थे कि 2001 में क्यों सेंसस पर कर रहे हैं, बाद में क्यों नहीं। 4-5 मुद्दे मेन थे। ये लेटर है मेरे पास। एनआरसी के बात करें, पहले क्यों कर रहे हैं, डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू क्यों नहीं हो रहा, आप क्यों कर रहे हैं। यही मुद्दे कल भी हमारे सामने में और लोगों ने भी उठाए हैं। उसके बाद में हमने ये निर्णय लिया कि हमें सबको सुनना चाहिए और यही निर्णय लेकर हम लोग यहां आए हैं कि 1 to 1 सुनने के अलावा इसको ब्रॉड बेस किया जाए, सबको सुने। और सुनने के बाद आपके माध्यम से मैंने सभी प्रश्नों के मोटा मोटी मोरलेस जवाब भी दे दिए हैं। सो हमारी सबसे अपील है, और 15 तारीख तक हमारा ये प्रोसेस खुला हुआ है। जो भी हमसे समय चाहेगा हम उसको जितना समय चाहिए उतना देंगे, जितना मिलने की जगह होगी उतनी देंगे। और चाहते यही हैं कि इसको बहुत पार्टिसिपेटिव, मीनिंगफुल बनाएं और स्टेट के हक में जितना बेस्ट टू बेस्ट सबकी एस्पिरेशंस को इकट्ठा करके हो सकता है वो हो। थैंक यू। Long session, I think, is the next call today. Thank you. Right. Most of the political parties, what they have said, because they have given lot of information to the parents. I just. But that's all. I would like to know what is the mainly expect civil society, जो आसाम की आम नागरिक है, जो आपसे मिले लगभग 60 to 65, जो सिविल सोसाइटी है, उन लोग का मन में क्या है, थोड़ा सा आप खुलासा करेंगे? Please, please. Let this be last because we have a flight also. Yes. आपने जितना सारे लोगों को मिले हैं और हम लोगों से भी जो बात की है, तो आपको उसमें से क्या अनुभव मिला? We getting late to the time, please. And the second is whether exercise is carried out from the country in 2026, will it be again They should take the law, please. No, you have another point in this after 26. I'll answer that also. See, People are excluded from NRC. Will they counted in the evaluation? pardon, say again. 19 lakhs people are excluded from NRC till now. So they are included in count. They are counted in the evaluation process.
So now these three questions I'll answer last. Your question and my friend's question from there is a very interesting question actually, as to what a sense we get from the overall. And I'm telling it from my heart, because this question I never expected, and I can't summarize everything. 65 representations spread over 10-15 minutes each, 600 minutes into 2-3 lines. But जनरल जिसने भी बात की, सबने, सबके लोगों में यह है कि एक जो पीस और एक तो अपनी उस पीस को मेंटेन करना, उसमें रहना और उसके बीच में अपने सजेशंस देकर इस एक्सरसाइज को बहुत स्मूथली करा लेना, ये एक जनरल हमें महसूस हुआ. नोबडी वाज बाय एंड लार्ज अपोज टू दिस एक्सेप्ट दीज 3-4 पॉइंट्स. ये 3-4 पॉइंट बहुत लोगों ने उठाए कि 2001 क्यों, एनआरसी का क्यों नहीं और डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू क्यों नहीं. इसका जवाब मैंने आपके माध्यम से दिया. आई होप आई हैव बीन एबल टू सम एक्सटेंट सेटिस्फाई यू. जरूरत पड़ेगी फिर करेंगे. लेकिन सबके मन में एक एस्पिरेशनल असम, एक एस्पिरेशनल सोशो पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें पीस हो, वो सबकी नजर आ रहा था. एंड विच इज ए वेरी वेरी हेल्दी एंड एनकरेजिंग साइन फॉर अस. वी फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट. द सेकेंड थिंग वॉज अबाउट 19 lakhs which you mentioned. See, as I mentioned, these are two separate activities, distinct activities. What we are going to do is on the basis of the population of a particular year base. So if that population was there in the census, it will get counted. These are two different aspects and distinct aspects. After 2026 and after. As I read that 16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News18 Network. Sixteen channels,
15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. আজি জামানতনামা দাখিল হ'ব ৰাকেশ পালৰ সন্ধিয়া মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব ৰাকেশ পাল এডিঅ'ৰ গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ শুনানি শেষ নোহোৱালৈ হাজিৰ হৈ থাকিব লাগিব আদালতত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ চতুৰ্থটো গোচৰত জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ৰাকেশ পালৰ ভঙাগড় থানাৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিছে ৰাকেশ পালে পূৰ্বে আন তিনিটা গোচৰত জামিন পাইছিল এপিএছচিৰ কলংকিত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আদালতৰ কাম-কাজ সম্পন্ন হলেই আজি মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব ৰাকেশ পাল বিগত 6 বছৰ 4 মাহ ধৰি কাৰাবন্দী হৈ আছে এপিএছচিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰাকেশ পাল 2016 চনৰ 4 নৱেম্বৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰাকেশ পালক এপিএছচি কেলেংকাৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 70ৰো অধিক বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু এই 70 জনৰো অধিকে ইতিমধ্যে জামিন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ মাজতে এতিয়া ৰাকেশ পালৰো জামিন হ'ব অন্যতম অভিযুক্ত এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়ক বুলি যাক সকলোৱে কয় অভিহিত কৰে সেইগৰাকী ৰাকেশ পালে আজি জামিন লাভ কৰিব সন্ধিয়াৰ সময়তে হয়তো মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব এইগৰাকী ৰাকেশ পাল এডিঅ' গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰা হৈছে শুনানি শেষ নোহোৱালৈ হাজিৰ হৈ থাকিব লাগিব আদালতত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ চতুৰ্থটো গোচৰত জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ৰাকেশ পালৰ ভঙাগড় থানাৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিছে ৰাকেশ পালে পূৰ্বে আন তিনিটা গোচৰত জামিন পাইছিল এপিএছচিৰ কলংকিত প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ